اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں. کلاس 6 ہے, سبجیکٹ انگلش, اور آج ہم پڑھیں گے پروز میں دا کشمیری شال. دا کشمیری شال. لیٹس بگن. Our state is famous for many things. Study the following and gather information about them. جو ہمارا اسٹیٹ ہے, جو پہلے اسٹیٹ تھا آج یوٹی, یہ بہت سے چیزوں کے لیے مشہور ہے. جو ہم نے دیے ہیں آپ ان کو دیکھیے اور پھر ان کے بارے میں انفارمیشن جمع کریں. Study the following and gather information about them. Gardens, wood carving, arts and handicrafts, rivers, lakes, winter sports, scenic beauty, hospitality, Kashmir cuisine called Wazwan temples. Let's read. Who does not know about the Valley of Kashmir, a beautiful place in the north of India. In the north of India. وہ کون ہے جو نہیں جانتا ہے کشمیر کے بارے میں, جو ہندوستان کے نارتھ میں ہے. ایک بیوٹیفل, ایک خوبصورت جگہ ہے, ایک خوبصورت جگہ ہے. پیراڈائز آن دا ارتھ, اس کو کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ جنت ہے زمین پہ تو وہ صرف کشمیر ہے, تو وہ صرف کشمیر ہے. It is famous not only for its scenic beauty but also for its handicrafts that have won name and fame throughout the world. Among these handicrafts, it is the Kashmiri shawl, a fine and light wrapping that keeps you warm in winter and gives elegance to your personality. Kashmir has been producing shawls for centuries now. Francis Bernier was the first European who visited Kashmir in 1664 and who wrote about the softness and delicacy of this local fabric. These shawls are woven on handlooms by men and are about 2 meters long and 1.25 meters wide. Bernier talks about two types of shawls, one made with local fine wool and the other from the soft and fleecy hairs from the breast of the wild goat, the Kel goat, the latter much more expensive. In winter, the wild goats found in the high altitudes of Tibet and Central Asia grow a layer of soft hair under their normal crunchy hair. This helps them survive in cold at the high altitude. When spring comes, these goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks. Now there are farmers where the goat is reared and the wool is collected. The local people gather in this fleece called home in Kashmiri and sell it in Kashmir Valley. We have now farmers where the Kel goats are reared and the wool is collected on a large scale. In Kashmir and other areas, local goats also produce wool and are combed to remove it. But the shawls made from this wool are inferior in quality to those made from wool got from the wild goat. اس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گی. وادی کشمیر کو اپنی خوبصورتی کے سبب جنت کہا جاتا ہے. یہ اپنے حسین نظاروں کے علاوہ اپنی دستکاری کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے. دستکاری میں کشمیری شال خاص اہمیت رکھتے ہیں. کشمیر صدیوں سے شال پیدا کر رہا ہے. فرانسس بیریئر پہلا یورپی تھا جو 1664 عیسوی میں کشمیر میں چکر لگانے آیا اور اس علاقائی کپڑے کی ملائمت اور نزاکت کے بارے میں جس نے لکھا تھا. یہ شال مرد لوگ ان کنڈیوں پر بنتے ہیں جو 2 میٹر لمبی اور 100 میٹر چوڑی ہوتی ہے. بیریئر 2 قسم کے شالوں کے بارے میں بات کرتا ہے.
एक जो वो इलाकाई बढ़िया ऊन से बनाए जाते हैं, दूसरे जंगली बकरी के छाती की चमड़ी के नीचे से कोमल बालों से, और ये बाद वाले शाल ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। सर्दियों में जंगली बकरियां जो तिब्बत और वस्त एशिया के ऊंची बुलंदियों में पाई जाती है, अपने आम खुरदे बालों के नीचे नाजुक बालों की एक परत तह उगा लेती है, जो इन्हें ऊंचाइयों पर सर्दी से बच पाने में मददगार होती है। जब मौसमी बहार आता है, ये बकरियां अपनी फालतू परत अपने जिस्म को झाड़ियों से रगड़कर गिरा देती है। अब वहाँ बड़े इदारे बनाए गए हैं जहाँ इन बकरियों को पाला जाता है और ये ऊन इकट्ठे की जाती है। इलाकाई लोग इस ऊन को, जिससे कश्मीरी ज़बान में फम भी कहते हैं, फम कश्मीरी ज़बान में इसको क्या कहते हैं, फम, इकट्ठे करते हैं और वादी में बेचते हैं। हमारे पास अब वो बाड़े हैं जहाँ केल बकरियां पाली जाती है और बड़े पैमाने पर ऊन इकट्ठे की जाती है। कश्मीर दूसरे इलाकों में इलाकाई बकरियां पाली जाती है, ऊन पैदा करती है और उससे काटने के लिए कंघी की जाती है, लेकिन इससे बने हुए शाल सफात है जंगली बकरी से हासिल शुदा और के शाल से गठिया होते हैं। जो ये शाल कश्मीरी जो आम बकरियां होती है, इसके मुकाबले में जो ये कैल गोट है, इसके जो ये ऊन होता है जिससे वो शाल बनाया जाता है, वो बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इन बकरियों को अब गवर्नमेंट ने पालने के लिए जगह बनाई है, और फिर जब ये ऊन अपने जिस्म से हटाते हैं, फिर वहाँ इसको जमा किया जाता है, फिर अच्छे शाल बनाए जाते हैं। बाकी वसल्लम, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।